नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। सावली के वांकानेर में किसान का नया प्रयोग, खेत के किनारे पोमेलो फल उगा के आमदनी बढ़ाने में मिली सफलता। पोस्ट ऑफिस अकाउंट के नियमों में बदलाव, कम से कम राशि की सीमा बढ़ी, मिनिमम बैलेंस न होने पर लगेगी पेनल्टी। गोत्री अस्पताल के कोरोना वार्ड में हो रही चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज मिले। पीपीई किट के बिना शख्स कोरोना वार्ड में जाके देता है चोरी की घटना को अंजाम। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव खबर से। सावली तालुका के वांकानेर विस्तार के एक किसान ने बहुत ही कम जगह में ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरा के फल की खेती की है, जिसके जरिए वो सालाना 15,000 तक की आय भी करते हैं। खेत के किनारों की जगह पे अगर आप कोई पेड़ लगाएं और वो पेड़ आपको किराया दे, ये मुमकिन है? जी हाँ, ये मुमकिन है। ये हुआ है सावली तालुका के वांकानेर विस्तार के एक किसान के साथ। इन्हें मिलिए, ये हैं धर्मेश पटेल, जिन्होंने 7 साल पहले चकोतरा यानी कि ग्रेप फ्रूट या कहें तो पोमेलो फल के बीज को अपने खेत के किनारे बोया था, जो 7 साल के बाद अब मौसम में 250 से ज़्यादा पोमेलो फल देते हैं, जिससे धर्मेश भाई को 15,000 तक की आय होती है। और इसमें खास बात यह है कि इसे बड़ा होने के लिए कोई विशेष जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खेत के किनारे ये छोटा पेड़ बन के खड़ा हो जाता है। ग्रेप फ्रूट के छिलके समेत उसके अंदर के फल से बड़ी मात्रा में विटामिन प्राप्त होते हैं, जिससे स्वास्थ्य के नज़रिए से इस फल की अहमियत बहुत ज़्यादा मानी जाती है। किसान धर्मेश पटेल और साथियों ने खेती में ऐसे नए प्रयोगों के जरिए गांव और तालुका के किसानों को कई नए आइडिया देकर खेत उत्पादों के विकास की पहल की है। અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છે પોમેલો ફ્રૂટની, જે મલ્ટીવિટામિન અને સારા એવા આરોગ્યપ્રદ વિટામિનવાળું ફળ છે અને ખેડૂતો માટે એટલે સારું છે કે એનો મેઇન ઉદ્દેશ એ કે ખેતીની જે જમીન તમારી પડી રહી છે છેડાપાડાની, એ જગ્યાએ પણ તમે રોપી અને એનો સારો એવો ઉત્પાદન, સારો એવું કમાઈ તમે કરી શકો છો અને એનો કોઈ આડઅસર છે નહીં। નીચે તમે જગ્યા બી એવી ખુલ્લી રહે છે કે નીચે બીજો ઘણો પાક એવો થઈ શકે અને ખાસ કે આનું છાલ, એનું અંદરનું ફળ, એ બંને આરોગ્ય માટે સારું છે। હવે આ તો આજથી 10 વર્ષ પહેલાં મારા ત્યાં ગણપતિનો ટાઈમ જ હતો અને તે વખત મારા મહેમાન બેંગ્લોરથી આવ્યા હતા, એટલે એ આ ફળને લઈને એક ફળ લઈને આવ્યા હતા, જેના 7 બીજ નીકળ્યા હતા। મેં અંકોટની અંદર મૂક્યા હતા। એ 7 બીજ અહીંયા મેં રોપ્યા થયા। એ 7 છોડ અત્યારે મારી જોડ છે અને એ 7 વર્ષે જ એનું ફળ આવ્યું। ખેડૂતોને ભલામણ એ જ કરું છું કે આ જગ્યા તમારી નહિવત રોકે છે અને ઉત્પાદન તમારી એ જગ્યાનું, જે તમારી જગ્યા યુઝ થાય એના કરતાં ઓછી યુઝ કરીને તમને આવક વધારે આપશે। अब ये खबर आप सबको छूने वाली है। पोस्ट ऑफिस खाते के बचत अकाउंट में अब जो मिनिमम बैलेंस यानी कि कम से कम जो राशि रखने की सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। साथ ही में अगर आपके डाकघर के खाते में, सेविंग खाते में अगर बैलेंस 0 है तो आपका खाता कभी भी बंद भी किया जा सकता है। नागरिक निवेश और बचत के लिए पोस्ट ऑफिस में खाता खोलते हैं, उन सभी के लिए ये बड़ी खबर है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के नियमों में बदलाव हुआ है, जिससे अब बैंक खाते में बैलेंस रखना ज़रूरी होगा।
अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पोस्ट ऑफिस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की सीमा को बढ़ाया गया है। अब आपको अपने पोस्ट ऑफिस खाते में कम से कम 500 रुपये रखने आवश्यक होंगे। ऐसा नहीं करने पर वित्तीय वर्ष में आपको पेनल्टी लग सकती है। पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ऐसा अब हर साल किया जाएगा। साथ ही में अगर खाते में ज़ीरो बैलेंस होता है तो अकाउंट को अपने आप बंद भी कर दिया जाएगा। वर्तमान में डाकघर व्यक्तिगत और संयुक्त बचत खातों में 4% ब्याज देता है। इससे पहले पोस्ट ऑफिस अकाउंट में मात्र 50 रुपये न्यूनतम शेष रखना होता था। साथ ही में एक और सर्कुलर भी जारी किया गया है जिसमें पोस्ट ऑफिस खाते को आधार से लिंक करना भी बेहद ज़रूरी होगा। स्थानिक स्वराज के चुनाव आने वाले कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। तब बड़ौदा शहर में रास्तों की खस्ता हालत का विवाद अब हर एक विस्तार में देखा गया है। तब आज लालबाग ब्रिज के नीचे जाते सर्विस रोड की खस्ता हालत के खिलाफ नगर सेवक बालू सुर्वे ने विरोध जताया था। रास्तों की खस्ता हालत का मुद्दा इन दिनों शहर के सभी इलाकों में चर्चा का विषय बना है। ये तस्वीरें लालबाग ब्रिज के नीचे की है, जहां से जाता सर्विस रोड बद से बदतर हालत में है। तब नगर सेवक बालू सुर्वे की ओर से इस मुद्दे पर लगातार सामान्य सभा में आवाज़ उठाई गई है, पर नतीजा कुछ नहीं आया। बस रास्तों पे कंकर पत्थर डाल दिए जाते हैं जो वाहनों की आवाजाही से गड्ढों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तब आज फिर से इस रोड पे कारपेटिंग करने की मांग उठाई गई है, जबकि वहां से गुजरते आम नागरिकों ने भी पालिका प्रशासन की लापरवाही पे गुस्सा जताया। आने वाले समय में जब स्थानिक स्वराज के चुनाव आने वाले हैं, तब ये सब मुद्दे भाजपा सरकार को सीधी असर कर सकते हैं। અમારા વિસ્તારમાં લાલબાગ બ્રિજના નીચે સર્વિસ રોડ આવ્યો છે। એ સર્વિસ રોડથી રોજના હજારો લોકો આવતા જતા હોય છે અને એટલા મોટા મોટા ખાડા પડી ગયા છે, કેટલા સમયથી પડેલા છે। વારંવાર ખાલી થોડું નાનું આવીને છારું નાખી જાય છે। એ જ પ્રમાણે વિસ્તારમાં વોર્ડમાં તમે જયરત્ન બિલ્ડિંગ જો, તંબોલી વોર્ડ જો, પથ્થર ગેટ જો, પેલું ચુનારાવાસ પાસે જો, ચોખંડી પાસે બધી જગ્યાએ ખાડા પડી ગયા છે। ના તંત્રની કોઈ આંખ ખુલતી નથી। રોજના નાના મોટા એક્સિડન્ટ થાય છે, કેટલા લોકો ફ્રેક્ચર થઈ જાય છે, કેટલા લોકોને વાગે છે, પણ અધિકારીને સત્તાધારી પક્ષને કોઈની પડી નથી। લોકોને બધાને ભગવાન ભરોસે મૂકી દીધા છે। અમારી એવી માગણી છે કે આ જે સર્વિસ રોડ છે લાલબાગ બ્રિજના નીચેવાળો, રોજના હજારો લોકો અહીંથી આવતા જતા હોય છે અને એટલે એવી માગણી છે કે કાર્પેટ કરવામાં આવે। ફક્ત ને ફક્ત થોડું છારું નાખીને જાય, નાનું પેજ મારે, એમાં કામ ના થાય। આખું પૂરું કાર્પેટ કરવામાં આવે તો લોકોને આવતા જતા લોકોને રાહત મળે। અમે દરેક સભામાં રજૂઆતો કરી છે અને રોજના અમે ફોન પર બી જે તે અધિકારીઓને રજૂઆત કરતા હોય છે, પણ કોઈ અધિકારી, કોઈ સત્તાધારી પક્ષ, કોઈ અહીં ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી। બીજા મોટા ખોટા રોડ બનાવે છે। જે જરૂર છે, જેથી લોકો આવતા જતા હોય છે, અહીંથી લોકો માંજલપુર જાય, મુજમોડા જાય, અહીં કાશી વિશ્વનાથ મંદિરે જાય, પોલો ગ્રાઉન્ડ જાય, લોકો અહીંથી આમ જે મુખ્ય માર્ગ કહેવાય વડોદરાનો, એટલે તઈ ખરેખર કાર્પેટ કરવી જરૂરી છે એવી અમારી માંગ છે। વડોદરા શહેરના તમામ રોડ, મને એક પણ રોડ બતાવજો તમે જે સારી કન્ડિશનમાં હશે। ત્યારે તમામ રોડ તૂટી ગયા છે। એમાંથી 100% ભ્રષ્ટાચારની બૂ આવે છે। એક પણ રોડ નથી એવું કે જ્યાં તમે સિમ્પલ ગાડી ચલાવી શકો છો। ખરેખર આ વડોદરા શહેરની દુર્દશા કરવામાં સત્તાધારી પક્ષનો સૌ ખૂબ મોટો હાથ છે અને ખરેખર પ્રજાએ હવે જાગવાની જરૂર છે। લોકોની અપેક્ષા શું હોય છે સરકારથી, કે સત્તાધારી પક્ષથી? રોડ, ગટર, પાણી, ત્રણ વસ્તુ આજે વડોદરા શહેરની તમે જોઈ શકો છો। પાણી વર્ષોથી ગંદુ આવે છે। રોડ તો તમે જોઈ લો, તમે એક રોડ વડોદરા શહેર તમે બતાવી દો મને જે સારું હોય। તમામ રોડ તૂટી ચૂક્યા છે। બહુ દુઃખદ વાત છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए BRG न्यूज़।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ौदा शहर के खोडियार नगर विस्तार में मुख्यमंत्री आवासों के नागरिकों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तब आज मां रेसिडेंसी के नागरिकों ने अर्धनग्न अवस्था में पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अर्धनग्न अवस्था में विरोध कर रहे ये खोडियार नगर विस्तार में आए मुख्यमंत्री आवास योजना के रईस है। मां रेसिडेंसी नाम से 154 आवास गरीबों के लिए बनाए गए, पर अभी सिर्फ 80 घरों में लोग रहने आए हैं। उसमें भी पानी की किल्लत का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। कॉरपोरेशन की हद में आते विस्तार में अभी तक पालिका की पानी की लाइन तक नहीं आई है। बोर के जरिए ये निवासी पानी प्राप्त कर रहे थे, पर बीते 1 महीने से बोर में भी पानी आना बंद हो गया है। इस मुद्दे पर पालिका कचहरी पे गुहार लगाने पर इन्हें सही जवाब तक नहीं मिलता। तब आज रहीशों ने थक हार कर अर्धनग्न हालत में पालिका के पास जीवन जरूरी पानी देने की मांग मीडिया के जरिए की है। पानी का उपयोग सुबह से रात तक पल पल होता है, तब पानी के बगैर का जीवन स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित होते बड़ौदा के ये नागरिक बिता रहे हैं। એસી જણ આવ્યા છે, 154 મકાનો છે અને હજુ પૂરતું પાણી નથી આપી શકતી આ સરકાર. કોર્પોરેશનનું પાણી બિલકુલ આવતું નથી, મીઠું પાણી બિલકુલ આવતું નથી. સવારે પાણી પુરવઠાના અધિકારી યોગેશ વસાવાને ફોન કર્યો તો તુછડો જવાબ આપ્યો છે, કોઈ સારો જવાબ મળ્યો નથી. કરીએ છીએ, કરીશું એવું ના હોય આવો જવાબ મળ્યો છે. અને અત્યારે જોઈ રહ્યા છો કે મા રેસિડેન્સી જે મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજનાના મકાનો છે, રોડ પણ નથી. પાણી તો અઠવાડિયાથી આ પાણીની તકલીફ છે, 1 મહિનાથી એમના તકલીફો બધી પડી રહી છે પાણીની. નયા વગર છે, આજે રવિવાર છે, લોકોને તકલીફ પડી, રોજ નોકરી ધંધે જવાનું હોય અને આ તકલીફો પડતી હોય. પાણી એક જીવવાનું એક સાધન છે. સવારે ઉઠે એટલે પાણીથી સવાર્થ પડતું હોય, ત્યારે આ સરકાર પાણી નથી આપતી તો શું વાત કરે છે, વિકાસની વાતો કરે છે. અર્ધનગ્ન થવાનું કારણ એમ છે કે અમે નયા વગરના છે અને અત્યારે અર્ધનગ્ન થઈને વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાઈ રહ્યો છું. આ સોસાયટી માટે લડત આપીશ અને મીઠું પાણી આ સોસાયટીને લવડાવીને જ રહીશ. અને કોર્પોરેશનનો જે સબમર્સિબલ પંપ આપ્યો છે એ પંપ પણ ખખડધજ હાલતમાં છે. 154 મકાનો છે, 3 ટાવર આપ્યા છે. પૂરતો સબમર્સિબલ પંપ પ્રેશરવાળો આપવો જોઈએ. અમારો પ્રોબ્લેમ છે કે ખોડિયાર નગર 4 રસ્તાની અંદર અમારું આવેલું છે મા રેસિડેન્સી સોસાયટી. ત્યાં રોજનો રોજ આવો પાણીનો ત્રાસ આપેલો છે. આવો પાણીનો ત્રાસ અમે કઈ રીતના વેઠીએ? અમારા ઘરે અત્યારે સુવાળો આવેલી છે, અમારે પાણી ના જોઈએ. સવાર 6 વાગ્યાનું પાણી જતું રહે છે. આવું અમે કઈ રીતના રોજ ચલાવીએ? આજે આ રાડા હોય તો કાલે પહેલા હોય તો કાલે પહેલા હોય. આજે કાલે ચાલુ કરાવ્યું તો લિફ્ટ બંધ થઈ ગઈ, આજે પાણીનું બંધ થઈ ગયું, કાલે 2 દિવસ પહેલા સોલર બંધ થઈ ગયું. આવું બધું રોજનું રોજ કેમ ચાલે? આવું અમે આટલું બધું કેમ સહન કરી શકીએ? પાણીનું રોજ જ તકલીફ છે અમને કે સવારે 6 વાગ્યાનું પાણી જતું રહે છે. આજે મોટર ખલાસ થઈ ગઈ, આજે આ થઈ ગયું, આજે બોરિંગ બગડી ગયો. આવું રોજનું રોજ થોડું ચાલે? કોર્પોરેશન વાળા અમને થોડું પાણીની તો સુવિધા આપી શકે છે કે કેમ? અમારે કઈ મરી થોડું જવાનું છે? સોસાયટી બનાવી આપી છે કે કચરા પેટી આપી છે અમને? આટલું બધું તો નહીં ચાલે અમને. પછી તમે નહીં અમને કઈ સુવિધા આપો તો પછી અમે સરકારમાં આડી લાગીશું, અમે અરજીઓ ફેંકી દઈશું. અમારે અહીંયા રહેવું નથી, અમને બીજા મકાનમાં બદલી કરી આપો, અમારે બીજું કોઈ જોઈએ ના આવે. गोत्री अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में से कोरोना मरीजों के मोबाइल समेत कीमती चीजों की चोरी की वारदात लगातार हो रही है। तब गोरवा पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर जब गोत्री अस्पताल के सीसीटीवी खंगाले तो एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स बिना पीपीई किट पहने कोरोना वार्ड में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। बीते 1 महीने से गोत्री अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की चीज़ें चोरी होने की शिकायत सामने आ रही थी। गोत्री में गरीब और मध्यम परिवार के नागरिकों का कोरोना इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। तब बीते 1 महीने में कोरोना के मरीजों के मोबाइल समेत सोने की चेन की चोरी होने की कई घटनाएं हुई, पर किसी भी मरीज की ओर से लिखित में ये शिकायत नहीं की गई थी।
जबकि अकोटा के विधायक के ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें गोत्री अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया था, जहां से उनके करीबन 90,000 के मोबाइल की चोरी होने पर गोरवा पुलिस थाने में शिकायत की गई। तब गोरवा पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। कोरोना महामारी में जहां पीपीई किट के बिना आइसोलेशन वार्ड में कोई जाता नहीं है, वहां मास्क पहने एक शख्स कोरोना वार्ड में प्रवेश करता है और मोबाइल चोरी करके निकल जाता है। तब गोत्री अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शीतल मिस्त्री से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोरवा पुलिस ने जांच का दौर शुरू किया है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सावली के वांकानेर में किसान का नया प्रयोग, खेत के किनारे पोमेलो फल उगा के आमदनी बढ़ाने में मिली सफलता। पोस्ट ऑफिस अकाउंट के नियमों में बदलाव, कम से कम राशि की सीमा बढ़ी, मिनिमम बैलेंस न होने पर लगेगी पेनल्टी। गोत्री अस्पताल के कोरोना वार्ड में हो रही चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज मिले। पीपीई किट के बिना शख्स कोरोना वार्ड में जाके देता है चोरी की घटना को अंजाम। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।